in triangle ABC, prove that. This was the common for all. Your first question was prove that A square minus B square upon cos A plus cos B plus B square minus C square upon cos B plus cos C plus C square minus A square upon cos C plus cos A. Is equals to 0. This was to be proved. फर्स्ट क्वेश्चन यही था. Yes, sir. See how we prove. See the first term. In LHS, the first term is A square minus B square upon cos A plus cos B. In numerator, apply sine rule. A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C, and we suppose it as K. So many times I have written. So according to sine rule, this should be K square sine square A minus K square sine square B. K square should taken as common upon cos A plus cos B. Sine square A, you know, 1 minus cos square A. So it should be written as K 1 minus cos square A. Similarly, sine square B is 1 minus cos square B. So it should be minus 1 plus cos square B divided by cos A plus cos B. Is it clear now? Minus and plus 1 should cancel. How much left in numerator? Cos square B minus cos square A. Apply the formula for A square minus B square. So we may write cos A plus cos B or cos B plus cos A into cos B minus cos A upon cos A plus cos B. So cos A plus cos B should be cancelled. So the value of first term, that is A square minus B square upon cos A plus cos B will be cos B minus cos A. Any problem? No, sir. First derive and then write other part accordingly that. See, your second part is, we write here similarly, triple LY is symbol for similarly. Similarly, B square minus C square upon Excuse me, cos sir. plus cos C is how much? Tell me. Similarly, B square minus C square upon cos B plus cos C, like this, how much?
Cos C minus cos B. Cos C minus Cos B. cos B. And the third one will be, the third term should how much? Cos A minus B. cos C. So Yes, sir. just a minute. Yeah. And C square minus A square upon cos C minus, sorry, plus cos A is equals to cos A minus cos C. Now put all these values in LHS of the question. Put all these values in LHS of the question. Will you get 0? Value of first term is cos B minus cos A plus the value of second term is cos C minus cos B plus the value of third term will be cos A minus cos C. Each term should cancel, cos C negative and positive, cos B negative and positive, cos A positive negative should cancel, that is RHS. Yes, any doubt? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, वहाँ पे एक चीज पूछना है। सर वहाँ के स्क्वायर था ना सेकंड स्टेप में, उसके बाद के आया, फिर उसके बाद के कहाँ चला गया? सॉरी, के स्क्वायर तो यही है ही। खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, के स्क्वायर ओवरऑल कॉमन हो जाएगा। सॉरी आई लेफ्ट के स्क्वायर। वहाँ नहीं लेते हैं उसको, इसलिए पूछे थे। के स्क्वायर ओवरऑल टेक के स्क्वायर एज कॉमन, k square into 0, that is k square. Now any doubt? No sir. The next question. The question I have given, that was cos A upon A is equals to, that was the question. If cos A upon A is equals to cos B upon B, then prove that triangle is isosceles. This was the question. The second question was, if cos A upon A is equal to cos B upon B, then prove that triangle is isosceles. This was the question. Tell me. Yes, sir. So, what is given? Cos A upon A is equal to cos B upon B. So, replace A and B by applying sine rule. This was very simple question. Cos A upon K sine A is equals to cos B upon K sine B. K and K should be cancelled. So cos A upon sine A will be cot A. Similarly, it is cot B. Cot A is equal to cot B, means angle A is equal to angle B.
Two angles are equal. Therefore, triangle is isosceles. सर अगर एंगल को इक्वल ना करके साइड को इक्वल कर देंगे तब भी हो जाएगा ना प्रूफ? हो जाएगा। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का फॉर्मूला है कि अदर टू साइड्स और बेस एंगल्स आर इक्वल, मींस टू एंगल्स आर इक्वल। साइड को लेकर चलेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लंबा होगा। See the third one. Have you remember question? Have you question? Yes sir. What was question? Tell me. If A equals to 60 degree. Right. So what is given? Angle A is equal to 60 degree. Right? Yes sir. Then prove 1 by A plus B plus plus 1 upon A plus C 1 upon A plus C equals to 3 upon A plus B plus C. 3 upon A plus B plus C. See, this question, what is given? Angle A is 60 degree. You have to prove this one. We will prove this result by reverse process. Means if 1 upon A plus B plus 1 upon A plus C is this one, then prove that angle is called 60 degree. Angle A is 60 degree. यानी यदि हम लोग इसको कंसीडर करके या प्रूव कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? No sir. एक एग्जाम्पल लो। यदि क्वेश्चन है, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ रफ में। इफ x is equal to 2, then prove that x plus 5 is equal to 7. Suppose this is question. If x is equal to 2, then prove that x plus 5 is equal to 7. हम लोग x plus 5 is equal to 7 लेकर चलें और x is equal to 2 प्रूव कर दें तो सही हो जाएगा। Since x plus 5 is equal to 7 और प्रूव कर दें x is equal to 2 तो हो जाएगा करेक्ट? Yes sir. यही चीज यहाँ पर है। हम लोग इसको लेकर चलें, दिस इज गिवन, और प्रूव कर दें एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम लोग इसको इफ लेकर चलें, इफ दिस वन, देन प्रूव दैट एंगल ए इज 60 डिग्री, हो जाएगा। ये जो मेथड है, तो इफ हम लोग लिखते हैं ना, दिस इज कॉल्ड IFF, इफ। सेट्स हम लोग कर रहे थे तो ये कंडीशन था ना, इम्प्लाइज इज इम्प्लाइड बाय, जो दिया रहता था ये प्रूव करते थे और फिर इसको लेकर ये प्रूव करते थे। वही चीज यहाँ पर है, इसको लेकर हम लोग यह प्रूव करेंगे। इसी को कहते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चन। So start from here and get the result. Angle A is equal to 60 degree. First of all, take LCM. A plus B into A plus C. This should be A plus C plus A plus B is equals to 3 upon A plus B plus C. Now, the left side, numerator will be how much?
what will be the sum of numerator or value of numerator? 2a plus c plus b. Plus b plus c. Multiply with cross multiplication, a plus b plus c. And in right side we have 3 into a plus b into a plus c. Now multiply term-wise. First, by 2a multiply each of the term. So it should be 2a square plus 2ab plus 2ac. Secondly, multiply by b square b. So ab plus b square plus bc. Third by c. ca plus bc plus c square. Similarly, in right side, a square plus ac plus ab plus bc, each term is multiplied by 3. So after multiplication, it should be 3a square plus 3ac. ab plus 3ac plus 3bc. BC. Is it clear? Is it clear? Yes. Yes, sir. Any- Clear है. Any doubt? No. So proceed. First of all, cancels any term if any. See here. 2ac plus ac. 3ac in left side and right side also 3ac. So 3ac should cancel. Similarly, see which term should more cancel. Check. Sir, AB term 3AB. 3ab, right. 2ab plus ab, that is also 3ab. Any more term? No. No, sir. Now see, first write b square plus c square. B square plus c square. Now 2a square, or transfer this term into left side, minus 3a square, that is minus a square, is equals to, in right side, 3bc. These two terms have been transferred into right side. 3bc minus 2bc. That is bc. Is it clear? Yes, sir. Now divide both sides by 2bc. Divide both sides by 2bc. Then in right side we have 1 by 2. And this is formula for which term? Cosine formula. Tell me what is its value? Do you remember cosine formula? Yes, sir. Cos A equals to b square plus c square minus a square upon 2b. Or cos A. So cos A is 1 by 2.
cos A is 1/2. 1/2 means cos 60 degree. 1/2 is value of cos 60 degree. So A is equal to 60 degree. Now tell me, it is clear? Actually, these questions are not in R.S. Agarwal book, perhaps. Is it clear? Yes, sir. We go for next question. सर Yeah. जो लास्ट का स्टेप अप किया, लास्ट सेकंड स्टेप, वहां तक तो मैं कर ली थी सर। आपको याद है कि डिवाइड टू बी से करना है? हम लोग को तो याद नहीं है ना। याद की बात नहीं है, बीसी को इधर ट्रांसफर भी कर सकते थे। हाँ ये तो ऑन द स्पॉट हम याद भी नहीं है तो बीसी को इधर ट्रांसफर भी कर सकते थे और इसको फॉर्मूला के फॉर्म में ला सकते थे ओके सर। ना। ये याद मैथमेटिक्स है, ये याद नहीं किया जाता है, इसको सिर्फ समझा जाता है कि ऐसे हम लोग ट्रांसफर कर दें तो फॉर्मूला का फॉर्म बन जाएगा। क्योंकि ये तो एंगल और साइड टर्म दिया हुआ, साइड में लाना है एंगल में। एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एक्चुअली गिवन, तो वहां से हमारे पास कुछ बन ही नहीं रहा था। कोशिश करते तो वो भी बनता। एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, जस्ट अंडरस्टैंड। वहां थोड़ा लंबा सी है। What is given? Angle A is equal to 60 degree. Then cos A is equal to cos 60 degree. B square plus C square minus A square by 2BC is equal to 1/2. So we can proceed in this way also. Long. So don't learn. Mathematics है प्रैक्टिस, इसी में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करो। अब देखो आप लोग टिपिकल आर.एस. अग्रवाल हो गए हैं, अदर देन आर.एस. अग्रवाल दे रहे हैं तो नहीं बन पा रहा। व्हाट इज प्रॉब्लम? Try to understand the basic terms. I think next question was prove that b square cos 2a minus a square cos 2b is equals to b square minus a square. ये क्वेश्चन था ना? यस सर, क्वेश्चन नंबर 4। सर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 दूसरा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो पहले हम लोग इसी को कर लेते हैं। यस सर। तो करना तो सब है, हमको सीरियली याद नहीं है तो इसी को कर लेते हैं। ठीक, what is given? What is to prove? B square cos 2a minus a square cos 2b. Start from LHS. B square cos 2a minus a square cos 2b. This was your LHS. Apply the formula. देखो, you have to come on basic. हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस
एंगल के टर्म को एलिमिनेट करना है, कॉस को हटाना है ना, बेसिक यही चीज समझो, कॉस को हटाना है, एंगल को हटाकर सबको साइड के फॉर्म में लाना है। अब ये कैसे हटेगा? वी हैव टू वे, हमारे पास दो तरीका है। कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार चले, तो कॉस ए का फॉर्मूला हमारे पास है, कॉस 2a का नहीं है, तब 2a को ट्रांसफर कर दें ए के फॉर्मूला में, तो cos 2a का I have two formula we have in terms of sine or in terms of cos. So see, cos 2a is 1 minus 2 sine square a minus a square into 1 minus 2 sine square b. So if we apply sine rule here, then we can easily obtain the angles in terms of sine. A upon sine A is equals to B upon sine B. Take reciprocal, then sine A upon A should also equal to sine B upon B. Suppose this ratio is K, then sine A is how much? A into K. So 2 sine, it is sine square, so it is A square K square minus A square 1 minus 2, it should be B square K square. Right. Now open the bracket, B square minus A square B square K square minus A square plus 2. Sorry, I have left here 2. Yes, sir. 2. 2 A square B square K square. So minus 2A square B square K square and plus 2A square B square K square should be cancelled. B square minus A square. Clear? Yes, sir. Yeah. Any doubt? Other students, tell me any doubt, any confusion? No, sir. No, sir. अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, व्हाई वी टेक रेसिप्रोकल? नहीं भी लेते, सी को के कंसीडर करते, देन साइन ए विल बी ए बाई के, सो इट शुड बी a square by k square. Again this term should be cancelled. One question I think left. So see the question. Tell me what was question. If you have question, then tell me. Sir, if B plus C equals to 2A. If B plus C is equals to 2A, Then proof cos bracket B minus A upon 2 cos B minus C upon 2 is equals to 2 sine A upon 2. 2 sine A upon 2. The question. All of you have question?
if B plus C is equals to 2A, then prove that. So see what is given. B plus C, just I am arranging the page. What is given? B plus C is equals to 2A. So apply sine rule. Apply sine rule. It should be written as K sine B plus K sine C is equals to 2 into K sine A. You must write in bracket here by sine rule. K should be cancelled after taking common. So take K as a common and it should be sine B plus sine C is equal to 2 sine A. Now apply the formula for sine C plus sine D. Tell me, who will answer? Sine B plus sine C is equal to 2 cos A plus B by 2 into. No. It is 2 sine B plus C by 2 into cos. A minus B upon 2. 2 sine B plus C upon 2 into cos B minus C upon 2. Similarly, expand sine A in terms of sine 2A formula. 2 sine A upon 2 into cos A upon 2. Right? 2 and 2 should cancel. Now this is case of triangle. So in triangle, sum of 3 angles is 180 degree. So B plus C is 180 degree minus A, and B plus C by 2 is 90 degree minus A by 2. So write sine B plus C by 2 as sine 90 degree minus A upon 2 cos B minus C upon 2 is equals to 2 sine A upon 2 into cos A upon 2. Sine 90 degree minus A upon 2 will be cos A upon 2 into cos B minus C upon 2 is equals to 2 sine A upon 2 into cos A upon 2. Cos A upon 2 from both sides will cancel. This is your result. Clear now?